today's lecture at 5:30, you remember, I provided you two important. I give you many things, but two important things which an engineer must know. Delaways. Number one, Python. Number two, Linux. It is very important. Okay? So whenever Okay, you sir. get an opportunity to learn these two tools, must do them. Then is the okay. So I will cover initially. I'm covering the Linux, then sorry Windows, because whatever I'm doing, these are, and you can see they are for the Windows machine, because you may have in your network Windows servers or Windows workstations. So you may have to look at the TCP connections or UDP connections, because your computer is part of the network. Good. Then is the second thing is, as I said earlier, that some of the processes might be with a good name, they are there. For example, here is the example that he is saying that go to this process, which is isass.xg. So I go to my this tool again, ISLIFHI. I will give it the search. सर ये एल है एल मैंने आई लिखा एल मे एस बी जी बिल्कुल LS. I think I wrote the same, लेकिन no problem. I will write here Control V. Anyhow, no problem. We can might be के इसमें जाते नहीं हैं. System security tools. Here I am in LDH. If this is the issue, might be it has been deleted for some reason, but no issue with me because I can extract it again. It will take less than a minute. I say straight, and you say again, yes. कौन सा हुआ? ये अब हुआ. आप इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि डबल में क्या जरूरत. Delete. And so because it is already open, probably अभी हम टाइम में जाया करते हैं, यहाँ जाते हैं और सर ये टीसीपी व्यू के अंदर आएगा ना, टीसीपी व्यू को ओपन करें तो उसके अंदर फिर ये आएगा. तो इसको अलग .exe फाइल चलें. exe फाइल है बेसिकली. TCP will list the processes that are currently on your Windows PC at the time only Windows processes are running. Double click this. What is this? This is in which this is located. चलें हम इसको यहाँ से देखते हैं. Where is this? Yeah, here it is. And if I go to the LS, I need write like this. So A, B, C. Yeah, this is LSASS.exe. So what he's saying that right click it and go to the process. Initially, process properties. What it is telling me, where it is located.
It is located in the Windows System 32, and this is the name of the file. So it is in the Windows System 32. May I go to the Windows and System 32? Control C. Even if it is dangerous, I can stop it here. End process. Because it is in the right place, so I will not do this. So ladies and gentlemen, you can see here that I will go to the, I say okay, and I can show you that go to the here and to the, as we saw in the C, probably it was program files, C, I don't remember. If it is here, again, I should check process properties. Even you can close the connection. If you feel that this connection is some compromised one, close it. You may use the whois, which I will be using in a minute. So I use the process. It is in the Windows System 32. Okay. So I should go back here. System Windows System 32. Click it and search here. For example, LSASS. And in a minute you will find this file which is here. So इससे पता चलता है कि ये फाइल ठीक है. although ये किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है ये आप मुझे आप में से कोई बता देगा कि लोकल सिक्योरिटी, किसी भी कंप्यूटर की लोकल सिक्योरिटी के लिए ये फाइल काम कर रही होती है, प्रोसेस काम कर रहा है, तो इट इज नॉट समथिंग बैड. लेकिन अगर यही प्रोग्राम किसी और जगह पे होता, सी विंडोज सिस्टम 32 में ना होता, लाजमी तौर पे ये कोई मालवेयर था, ये कोई खराब चीज थी जो कि लाजमी तौर पे कोई बुरा काम ही कर रही होती. ओके, सो इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन हम आगे बढ़ते हैं. Yeah, you can see here Laiba. It is showing that this file is there, which is from 16/4/2021, and it is residing in this folder system 32, which is legal. No problem. Right? Now I can, what he's saying further, I showed here as well that this is your local security authority process. So it is not an issue. Okay? Close the properties window. View the properties of other processes. So that I said that play with it as much as you want. Okay. Now what you can do, you can start a new process. For example, you start the window Edge, Microsoft Edge, for example, or any other process. You will find these green for a short time, and then it will become white and established. The state will become established. Then I said that browse through your browser, go to different sites. For example, www.cisco.com, netacat.com, and blah blah. It is not essential that you should use the Microsoft Edge. You may be using the Google Chrome. You may be using the Firefox. Just an example, this is that start a new process to see that with the new process, your TCP view window shows something new to you. Okay. Anyhow, is it making sense or not? Amanullah. Yes, sir. What about you, Laiba? Sir, can you repeat it again? The last part? Sure. But ask yourself, okay? Be bold and be frank. Okay. What I was saying that, for example, I opened this here, and along with this, I open a new process. Let it be I open in the Edge, Microsoft Edge.
As I click, although, however, you can see that the reds are there, yellows are there, greens are there. But further, I want to show you that when I click this Microsoft Edge to start, definitely it will start the new processes because it is an application. Whenever, do remember, whenever an application starts, it starts the new processes in your system. So I'm clicking it. Yeah, so it is started, you can see. And in the meantime, if we look at, yeah, you can see here edge.exe, the new processes has started with the TCP, my computer. If you write something here now, you can see a lot of processes have been created only because of one application, which is Microsoft Edge. If I write here something, for example, www.cisco.com or any other, to start again new processes here because a connection is being now established with Cisco. You can see here, new processes started with, you can see here, Cisco. Many things are occurring. Yeah, you can see here, cisco.com, which means some processes are starting, some processes are ending. So basically what I want to explain in Windows, that ladies and gentlemen, whenever you start an application, processes will start. Okay, is it sufficient, Laiba? Or Yes, need sir, further got it. explanation? Thank you. Okay, nice. You are welcome. Now is the next stage that, and as I said, that you already have been provided this a number which you will download and implement and see definitely. Then the next task which we performed in the last class is to study furthermore about the processes, about the threads, about the handles, about the Windows registry. 4 things. First, processes. 2, threads. 3, handles. 4, Windows registry. What it means. So let's start. The same system, I should stop it. Okay, I should go back to my sysinternal. So I should go to where I have placed it in books, Cisco. You may have a different place, no issue. Cybersecurity tools, and one of them is required. So I may go for this with the old one because it is something. Okay, so I'm back at the Sysinternals Suite, and I go to a new executable, and the executable is process.exe proc exp.exe. आप कहेंगे ये आपने नया काम कहाँ से शुरू कर दिया? Ladies and gentlemen, the number of this task is 3.2.11. 3.2.11. I may write here 3.2.11. This is the newer task. In this task, ladies and gentlemen, from where you will find it? Again, the answer is that you should go to the NetAcad here, and it's 3.2.11. Okay, 3.2.11. You can see here, exploring processes, window processes, threads, handles, and Windows registry. You click it here, you will come here, you will reach here. G. Exploring processes, threads, handles, and window registry. So just you have to click
this link and you will get 3.2.11. And what is 3.2.11? Let me show you. Sorry. Yeah, 3.2.11. So you can see here, ladies and gentlemen, it is about exploring processes, threads, handles, window registry. And what are your objectives? Objectives are the following: exploring processes, exploring threads, handles, window registry. 3 tasks. So how you should explore the processes? So in your Sysinternals Suite, a process, an application is there, an executable file is there, whose process name is this one. proc exp.exe. So go to this, back to your Cisco, cybersecurity, then is the tools, in my case, Sysinternals Suite, and go to the pros exe MNOP, yeah, here proc.exe. So you may click any one of them. One is for 64-bit, other one is for 32-bit, but doesn't matter a lot for us. So I click this one. Again, it may ask me the, yeah. So it is not asking me because it is already there, but in your case, it will ask you, you say, yes, allow it, and this window you will get. So ladies and gentlemen, the good point is whatever the processes are there, which are running on your, not only for your network, but other processes also are visible to you here. Like for example, I have started the Explorer because Windows Explorer I'm using. So the process is there. And within this process, then there are other, for example, OneDrive.exe or WebExTMA.exe. These are the child processes. So we have so the good point, what is important here? Ladies and gentlemen, you can see how much CPU it is consuming, how much bytes it is taking. Description might be important. What does the description means? It means it tells you something about the company. It might be, with the looking at the company, you may become satisfied that this process is legitimate or not legitimate, but don't trust 100%. So ladies and gentlemen, for example, if what I do that if I close some of things here, what I should close this because it is not required. Linux is not required in this class for the time being. So I give password and then close it. This is closed. This is shut down. Power off. I want to close this hypervisor as well so that I should have all here. Okay, nice. So ladies and gentlemen, for example, I close this, shut down, and then I start it again. So you will see I start here CMD. And I will be happy if you perform these tasks along with me. Or agar along nahi kar rahe, so it is very must that after the class. मैंने किया सर. Good. After the class, you must do that. ठीक है Amanullah? So if I click this open, so it will start. When this is starting, you will see here that you got a CMD. अब ढूंढूं कैसे? ये भी मैं, this question was asked later on by क्या नाम है,
I don't remember. Your friend Laiba, that I can find this process. Very simple. The simple is that make it smaller, for example like this, make it on side, and here I have this icon. I have an icon here. Here you can see, जिसके ऊपर क्या लिखा है, फाइंड विंडोज प्रोसेस। कि आप वो प्रोसेस फाइंड करना चाहें जो कि चल रहा है, तो कैसे करेंगे? जस्ट ड्रैग इट, just drag it into this application and directly you will be there, cmd.exe, and you can see that this process cmd.exe is the child process of explorer.exe. This process cmd.exe is a child process of cmd.exe is a child process. You can see that this process is eating how much memory, how much, what is the PID, which is the process ID, what is the description, what is the company, and I will explain in a minute about the virus total as well, which is a online virus check. Online virus check. Because your computer may have only one tool, for example, but virus tool have numerous tools. So all the tools will check your file and give you a response. So this is something good. Okay, ladies and gentlemen, for example, if I click even a child within this, even you can see here one thing more. If I write some command here, for example, I write here ping in my command prompt, for example, www.cisco.com, and enter. You will find another process. Oh, you can see here ping.exe. Within the ping.exe, and as this ping finished, the process finished as well from here. So you can see the details of the process. You can see the details of the process. Furthermore, ladies and gentlemen, if I click, for example, this child process, and I click the right, I can go to the properties. So what it tells me, ladies and gentlemen, it tells me the process performance, how many bytes, for example, but mostly I am interested in the, instead of the performance, here, for example, how many processes, but mostly I am interested in one thing about the threads. You may ask me, what is a thread? What is a thread? Can anyone answer me what is a thread? जी gentlemen. अगर एक प्रोसेस है, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है cmd is a process, या conhost.exe is a process, and within this process the code which is executing a certain task, like for example in this one I have how many threads? 1 2 3 4 5. So it means, may I say that it is doing 5 different tasks. That's the reason we call it multi-threading, that there are multiple threads which are working, which are running simultaneously. If I show you in the cmd, for example, and I do the properties, you see there is only one process, one thread. तो पेरेंट में, क्योंकि ये उसका चाइल्ड है, या चाइल्ड का भी आगे चाइल्ड है ये कह लें, उसमें ज्यादा प्रोसेसेस, ज्यादा थ्रेड्स हैं. Furthermore, you can see from here that this thread, for example, what is the ID of this thread, when this thread started, what is the state of this thread, how much kernel time it has taken, how much user time it has taken, how many times the context switching has been done. You can see here now the two threads within the same process cmd.exe. Anyhow, can I ask about what do you mean by context switching?
delays, context switching. सर नहीं आएगा। No problem. अभी समझ आ जाती है. The idea or the concept is because our operating systems are multitasking operating system. क्या मतलब है? The electrical guys, इसका मतलब ये है, sorry सर ladies, both एक ladies are, प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट करना, जब अगर एक प्रोसेस है वो काम नहीं कर रहा या टाइम स्लॉट जो है उससे सर शिफ्ट करना सर, Okay. एक प्रोसेस से दूसरे to प्रोसेस। some extent right. It may be a process, it may be a thread. तो अगर लेट करें आपके कंप्यूटर में, तो इस वक्त मेरे कंप्यूटर में इस वक्त 1000 ऑफ प्रोसेसेस चल रहे हैं. द सेम कंडीशन इज विद यू एज वेल अमानुल्लाह. और अगर 1000 ऑफ प्रोसेसेस हैं तो 1000 ऑफ थ्रेड्स चल रहे हैं. तो प्रोसेसेस तो यहाँ पे 7 है लॉजिकली. 1000 ऑफ प्रोसेसर्स तो मैंने नहीं इंस्टॉल किए हुए. तो क्या होता है, जब एक प्रोसेस चलता है वो कुछ देर चलता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसकी स्टेट को सेव कर लेता है अपने पास, प्रिजर्व कर लेता है उसको अपने पास, और उसको प्रोसेसर से हटा देता है, और एक नया प्रोसेस, एक नई चीज, एक नया थ्रेड प्रोसेसर के हवाले कर देता है. किसके हवाले कर देता है? प्रोसेसर. तो यूं दूसरा प्रोसेस या दूसरा थ्रेड स्टार्ट हो गया काम करना. अब उसको भी खास टाइम दिया जाएगा. उसके बाद उसके कंटेंट्स को भी, उसकी प्रोसेस जो जहां तक वो पहुंचा है उसकी सारी चीजों को सेव कर लिया जाएगा. क्यों सेव किया जाएगा लाइबा? क्यों सेव किया जाएगा मानुल्लाह? इसलिए किया जाएगा क्योंकि वहीं से उसको दोबारा दोबारा उसके पास आएगा वापस, वहीं से उसको दोबारा स्टार्ट करना है. जब भी स्टार्ट करना है दोबारा वहीं से, क्योंकि अगर हर बार उसको शुरू से स्टार्ट किया गया तो वो प्रोसेस कभी या वो थ्रेड कभी अपना काम कंप्लीट करेगा ही नहीं. जैसे देखें ना, हर दिन आप यूनिवर्सिटी जाएं और आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बिठा दिया जाए, साल के बाद जाएं, 2 साल के बाद जाएं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बिठा दिया जाए, आप तो डिग्री कभी कंप्लीट ही नहीं करेंगे. तो कब कंप्लीट करेंगे? कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया तो हम प्रिजर्व कर लें आपकी स्टेट. जब आप दोबारा आए तो हम आपको सेकंड सेमेस्टर में बिठाएं. जब आप सेकंड सेमेस्टर का काम कंप्लीट कर लें तो हम आपकी स्टेट को प्रिजर्व कर लें, और जब आप दोबारा आए तो हम आपको थर्ड सेमेस्टर में. दिस प्रोसेस कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. इस वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके जो आज के ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल थ्रेड, आप तो कहते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन रियलिटी में साइमल्टेनियस नहीं है. एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, फिर पहला आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है. एंड इन दिस वे मोर थ्रेड्स आर रनिंग, मोर प्रोसेसेस आर रनिंग, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, और इट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग. मेक सेंस और नॉट, दिलावेज एंड लाइबा? Yes, sir. What about you, Laiba? Yeah. Yes, sir. Okay, nice. So you can see from here, you can see from here, you can see here that you see here the context switching. This process, thread, 12,000 times, approximately 12,438, and more context switching is also dangerous. क्योंकि अभी आपने स्टार्ट ही लिया, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहले ही दिन बैठे हैं और आपको वेट में डाल दिया गया. So this is a very important process, task of the operating system. Then here it is written kernel time and user time. What it means, ladies and gentlemen, it means that when your application starts, do remember that we have two spaces. One is called user space, user space, and the other is called system space or kernel space. So some kernel means you may say system, you may say OS, operating system. तो कुछ टास्क आपकी जो मेमोरी है ये डिवाइड होती है 2 हिस्सों में, लाइक हियर.
one is the user space, another one is the kernel space. So always your application start in the user space, but sometime it needs the attention of the kernel. It means it cannot perform this task. So then it will request to the kernel that do this job. And when it is done, response back to me. Give it back the control to me into the user space. So how much time this process, for example, process 1 or thread 1 took in the user space and how much in the kernel space. This may also be important for you. Kernel time, user's time. Right? It took the user time of 281 and it took the kernel of 500, for example. So these things are important for you to learn. Furthermore, ladies and gentlemen, if you have some worries about this, worries means you are some doubts about this process or thread, what you should do, right click it and give it to the virus total. Take it. Yeah, I clicked it. So what it's saying, hash submitted. In the virus total field, it is saying hash submitted. The server name or address could not be resolved. No, this is not the issue. Let me go to the here, or maybe here, it will be quick. Sorry, virus total, hash submitted to whom? To this site, virus total site. Yeah, you can see here, it is giving me a link 0/73. Click it and you will reach to this site, virustotal.com. And it will tell you that this file is from Microsoft. Lazmi taur pe CMD is from Microsoft. First thing. Then it is telling you that the name of the file is this, and size is this, blah blah, and it has been given for testing to so many like Avira, like Adware, like Alibaba, like blah blahs. You can see from here. Even Fortinet, FireEye, and everyone is saying that it is undetected. It means it doesn't have any something dangerous, malware, for example. So you should be happy. But if I get something here detected, which means there is some problem, and what you should do then? The first task you should do, come here and Kill the process. Kill the process. Like for example, I kill its parent, cmd.exe, and see here. Here is the CMD. If I click, you can see here it is available. Here it is available. I kill it and see what happens. It is saying, may I kill? Yes. Oh, the CMD is gone. Child be killed. Process is gone from here, and the CMD is gone from my system. So this is another task. Then we explored about the threads. Let me talk about the handles as well. Two ways. One way is from the same, that it should go here, for example, here, click it, any process, not essential कि कोई खास हमारा दोस्त है. Go to the properties and you can read about the threads, images, TCP, performance graphs, GPU, many things. Okay, no issue. Now for the handles, go to the view, and in the view, lower pane view.
The lower pane view is this view. This is the lower pane. This is the upper pane. You know, definitely. So you should go to the view, you should go to the lower, and you should click here. Handles. So it will show you. First of all, I should tell you what is handles. Handles means, ladies and gentlemen, the block of memory which is referred by a link is called handle. It refers to the memory, which means the RAM, a block of memory. So which memory blocks this process is referring can be seen from here. For example, ALPC port, here is the link. For example, event, blah, blah, you can see many more. Threads, Windows Station, all of them are the handles for this process. If I click it here, the handles change. If I click it here, the handles change. Yep. So you can see the handles. So they are referring to the memory, in other words, short terms. Then, ladies and gentlemen, the last thing which, yeah, is there any question? Laiba, Amanullah, सर ये हैंडल्स जो है विंडोज में होता है या लिनक्स में भी होगा? उधर भी डेफिनेटली है. उधर जब जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम इसको विंडोज के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं. देन इज दी लास्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. जाएं उसमें जरूर, तब्दीली कोई नहीं करनी अपने सिस्टम पे भी, मैं भी नहीं करूंगा. एंड दैट इज द रजिस्ट्री, द मोस्ट serious place to play with. Very careful. कोई चेंज नहीं करनी. सर मैं आपको बता दूंगा कि देख लो इस चीजों को. So how to reach to this registry? The easiest way is to go here in the search and write here reg edit, registry editor, EDIT. Yes, sir. You can see here registry editor. You can open it as an administrator or you can just open. So I will say don't use the administrator power. क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी, your whole machine can crash. Never. अगर जब तक must नहीं है या आप expert नहीं है, never go to the registry. But at least you should know registry. What is a registry? So I open it. Okay? It is dangerous. That's the reason he's saying me. I say, okay, open it. So, ladies and gentlemen, you can see here there are 5 H keys. जिसको hive भी कहते हैं. H key class root, H key current users, H key local machines, H key users, H key current configuration. ये 5 files के अंदर, which are I will say data structures के अंदर, आपके पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल है. So that's the reason I say it is the most dangerous place to work with. लेकिन इतना तो आपको इतना तो पता हो ना, आप definitely you are working with cyber security, तो bad guy will try to corrupt your registry if you want to make your computer unusable, for example. ठीक है? So how it is? First of all, I should tell you what is the job of these 5 hives, which mean H keys. First one is the H key classes, and you can see dash root. H key classes underscore root. Ladies and gentlemen, the job of this is, as you can see here, I open it, all the extension dot. So whenever you open a file, for example, PPT file or PPTX file or doc file or docx file or exe file or any other file, the extension is here. It will be matched here. If the extension is here, it will be opened. If it is not there, it means sorry. Like for example, if I say
Control F, and I say, for example, PPTX. और ले गया मुझे। तो सर मतलब जिस तरह हम पावर पॉइंट की एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो इसकी रजिस्ट्री में उसकी रजिस्ट्री में उसकी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऑटोमेटिकली आ जाती है। वेरी ठीक है नाइस, सर। वेरी नाइस। तो ये बात आपको बताना कि कौन कौन सी डॉट है ना, देखिए डॉट टीजे, डॉट टेक्स्ट, डॉट टीजे, डॉट थीम, डॉट, अगर हम पी में जाना चाहें तो ऊपर चले जाएंगे, एसक्यूएल, अगर हम डेटाबेसेस का कोई खेल खेलना चाहते हैं, अगर डी में जाएंगे तो डॉक नजर आ जाएगा। सो यू कैन सी हियर डिफरेंट एग्जीक्यूटिबल्स, सॉरी डॉट एक्सटेंशंस। नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट मीन्स करंट यूजर्स। मेरे कंप्यूटर पे तो एक ही यूजर है, एहसान, लेकिन नॉर्मली नेटवर्क्स में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल यूजर्स में भी allowed to work on a machine. So all the current users which are on the computer which are active, उनकी डिटेल्स यहाँ पे पाई जाएगी। उनके कौन सा सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके वोलेटाइल मेमोरी, उनके सिस्टम, उनके नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट के चीजें, एवरीथिंग, कंट्रोल पैनल उनका, सारी चीजें उनको यहाँ से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉफ्टवेयर में चले जाएं, कौन से सॉफ्टवेयर एहसान उल हक को अलाउड है, क्योंकि इसमें एक ही यूजर है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन से सॉफ्टवेयर को उसने इंस्टॉल किए हुए हैं या उसको अलाउड है, इन अदर वर्ड्स, जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी कुछ देर पहले मैंने किया। तो करंट यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सॉरी आई क्लोज्ड इट, अगेन आई शुड ओपन इट, REGEDIT enter, again is asking yes, and I opened it. So I'm back at the current users. Then is the local machine, H key local machine. By H key local machine, it means that it stores the information used by the registered applications like H की लोकल मशीन इज आपकी जो लोकल मशीन है, जो लोकल मशीन है उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी आपके अपने पास रखता है। कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन सी सिक्योरिटी की सेटिंग है, हार्डवेयर की सेटिंग है, सारा कुछ लोकल मशीन के अंदर है। इसके अलावा आपकी यूजर्स, देखिए आप कहेंगे फिर करंट यूजर और यूजर में क्या फर्क है? यूजर का मतलब हो सकता है कि आपके 50 यूजर्स हों, लेकिन उस वक्त एक्टिव जो है वो 10 हैं, तो 10 यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ होगी, बाकी तमाम 50 की यहाँ एच की यूजर्स में होगी। एंड देन द फाइनल इज करंट कॉन्फ़िगरेशन। इस वक्त आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, फॉन्ट्स किस किस्म के हैं, सिस्टम के बारे में क्या है, करंट कंट्रोल सेट क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर, कौन सी सर्विसेज हैं। सो दीज 5 रजिस्ट्रीज कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट से कि इनके साथ खेलिएगा, मैंने भी नहीं खेला, जस्ट इतना आपको पता होना जरूरी है कि रजिस्ट्री एक चीज है, उसमें 5 की हैं और उनमें क्या कुछ होता है, बस दैट्स इनफ। सर वैसे इनमें हम मतलब अपने उससे चेंजेस वगैरह तो कर सकते हैं ना, अगर कोई हमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई ऐसा काम अगर हो गया तो सिस्टम पूरा का पूरा क्रैश भी हो सकता है, इसलिए नहीं करना। सही है सर। ठीक है, बस इनको खोल के देख लें कि आपको इतना आइडिया हो कि अगर आपको कोई कहे रजिस्ट्री में कुछ काम करना है, कोई गाइडेंस दे तो आप कर सकें, बाकी कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट? यस सर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।
और अगर नहीं है तो मैं कहूँगा बस आप लोग भी थक गए होंगे, टेक रेस्ट। और कल मेरी इन 2 टास्क को, एक मैंने 3.03 और दूसरी मैंने 3.211 प्रोबेबली, ये 2 टास्क आपके सामने रखी। प्लीज गो थ्रू दैट। एक्सक्यूज मी सर। जी दिलावेज। सर लास्ट वीक जब हमारी क्लास भी लेट हुई थी तो आप बता रहे थे कि आपके इंटरनेट का शायद कोई इशू हुआ था, वो क्या आपको सर आपने फिगर आउट किया है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो इंटरनली कुछ फॉल्ट था या क्या हुआ बिल्कुल था? बिल्कुल जी, आई मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा आपने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये था दिलावेज कि जो ही मैंने अपनी 9:30 की क्लास, नहीं 9 o'clock के अराउंड, जो 9:10 9:05 समथिंग होगा, वो क्लास जो ही मैंने खत्म की तो डेफिनेटली मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिला हुआ था, क्योंकि उसके जरिए प्राइवेट एड्रेस से तो मैं बाहर नहीं जा सकता। तो इस पब्लिक आईपी एड्रेस, और दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू इन योर आईटीएन कोर्स लाइबा, ये आईपी एड्रेस किसी ने हासिल किया, जो पब्लिक आईपी था, बायर थे, किसी ने भी, नो आई डोंट नो। और उसने इस आईपी को इस्तेमाल करके मेरे राउटर, मेरे डीएसएल रूटर तक, ये मेरा डीएसएल रूटर है जो कि मेरे पूरे घर को, जितने भी डिवाइसेस हैं उनको वायरलेसली कनेक्ट कर देते थे। लेट के ये एंटेना है, इन एंटेना के जरिए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स, जिसमें मेरा लैपटॉप भी शामिल है, वो इस एंटेना के जरिए डीएसएल के साथ, और डीएसएल के जरिए इस आईपी के जरिए वो दुनिया के साथ कनेक्टेड है, जैसे मैं अभी आपसे कनेक्टेड हूं। अब उस शहजादे ने ये किया, या शहजादा या शहजादी व्हाटएवर, उसने ये किया कि इस आईपी के जरिए वो अंदर आया इस डीएसएल रूटर पे। और आपको पता है कि इस तक जाने के लिए, इस राउटर तक जाने के लिए कोई ना कोई तो पासवर्ड होगा। लेट करें, हम कहते हैं वो पासवर्ड है एबीसी। एबीसी, उसने इस एबीसी पासवर्ड को लेट करें कि डीईएफ से चेंज कर दिया। अब जब मैंने अपने कंप्यूटर के से इसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो मैं तो पासवर्ड दे रहा था एबीसी, क्योंकि मेरा पासवर्ड तो एबीसी था, लेकिन वहां तो पासवर्ड डीईएफ हो चुका था, इस वजह से मैं उससे कनेक्ट नहीं हो सक रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस राउटर का बैकअप जो है वो अपने कंप्यूटर पे कॉपी किया और चेक किया कि इसका कहां पे चेंज हुई है। पता चला कि इसका पासवर्ड जो है वो चेंज होकर डीईएफ हो चुका है। मैंने उस डीईएफ से लॉगिन किया इसके ऊपर, और फिर डीईएफ को चेंज कर दिया फॉर एग्जांपल XYZ से, ताकि इसका कंट्रोल जो इस पे था वो खत्म हो जाए। तो ये था उस दिन का इशू कि किसी बच्चे ने, किसी ने भी, हमें नहीं पता, तो सर उस बंदे को पासवर्ड मिला होगा तो इसी वजह से वो आया होगा ना। पासवर्ड उसने इस तरह हासिल किया कि जब आप इसको हैक कर लेते हैं तो फिर तो ये आपके पास चला गया ना। जी जी सर। तो इसको हैक करना पॉसिबल है। तो इसको उसने, क्योंकि मैंने पासवर्ड जो दिया हुआ था वो आसान था, जो कि गलत वो था, लेकिन हम घर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम हार्ड पासवर्ड नहीं देते। तो अगर आपने एक मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने अभी कहा एबीसी, तो आप कहते हैं घर में है तो डेफिनेटली आसान सा पासवर्ड दे दें, क्योंकि हर कोई घर में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे कहें जी एबीसी इस्तेमाल करो इन शॉर्ट। लेकिन अगर मैंने कोई कम्प्लेक्स दिया होता तो फिर इसको तोड़ने में शायद दिनों लग जाते, तो मैं प्रोटेक्ट रहता। तो एक अदर वर्ड, हम इस पे एक टास्क भी करेंगे इस कोर्स के दौरान कि पासवर्ड कैसे होने चाहिए, और उनको जब तोड़ा जाता है तो जब वो इस तरह के एबीसी टाइप होते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो विद इन मिनट्स टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको लंबा विद स्मॉल वर्ड्स, कैपिटल वर्ड्स, विद नंबर्स, विद स्पेशल कैरेक्टर बनाते हैं, देन इट टेक्स डेज टू क्लोज। तो डे में मेरा आईपी तब्दील हो चुका था, ये मुझे कभी भी नहीं तोड़ सकता था। गॉट इट? सर ये सर जो पासवर्ड तोड़ने के या उसको करने के तरीकाकार हैं, तो सर वो चीजें भी हम पढ़ेंगे, मतलब उस पे वो ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर वो खुद से वो कर रहे हैं। हम पासवर्ड ब्रेक करेंगे, यही तो अटैक का एक तरीका यही है कि अटैक में हम एक काम यही करते हैं कि हम अगले का पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। तो एनी अदर क्वेश्चन? लाइबा, अमानुल्लाह, दिलावेज, एहसन?
बस यही पूछना था। नो सर। गुड, ये पूछा कर, दिस इज गुड। बहुत से काम जो है वो इस कोर्स का मकसद ही, अभी तो हम सिर्फ अपनी बेसिक बना रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं रिकॉग्निसेंस, हम रिकॉग्निसेंस करेंगे, हम एक्सेस हासिल करेंगे, हम मेंटेन एक्सेस करेंगे, हम डिनायल ऑफ सर्विस क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए, लेकिन अच्छे पर्पस के लिए।